वेबिनार अरेंज किया है, जिसमें ज़ुबैर मदनी जो कि SUSI एक्सचेंज प्रोग्राम के एलुमनस भी हैं, इसके अलावा यूग्रेड एलुमनस भी हैं और करंटली जो है मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में जो है वो चेवनिंग स्कॉलरशिप के थ्रू अपना एमएस कर रहे हैं। इसके अलावा जो है ज़ुबैर मदनी ने काफ़ी दूसरे जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हैं वो भी ज्वाइन किए हुए हैं। तो वेलकम करते हैं हम ज़ुबैर मदनी को। Can you hear me? Yes, I can hear you. First of all, welcome Zubair, and today it's a pleasure for us to honor our guest who have achieved such a remarkable journey. So over to you. Okay. Thank you very much, Ajay, for having me here. It's been a pleasure to be here and to interact with all of the applicant and aspirant who are applying for SUSI Comparative Public Policy Making and Madeline Albright Scholarship Program. I'm not sure how we're gonna proceed. If you have any question, maybe I can answer, or if you want me to just because I don't have any presentation. So do you know how we are gonna proceed with this session? Are you gonna ask me any question, or should I be speaking? Jay, can you hear me?
There seem a technical glitch. It will be fixed in a second or two. Uh, Zubair will join in a minute or two. All the questions will be taken at the end. Zubair, can you hear me? I can hear you. Uh, Zubair, first of all the students want to know what are the requirements to apply for this SUSI exchange program. Okay. So I'm not sure. Should we proceed in Urdu or in English? What do you say? How's the audience? Are they okay with if I proceed in Urdu or in English? We should proceed. We should proceed in Urdu. Okay, perfect. So there are two exchange programs. You might know, you just sent me the link. I just came to know that they have changed the program. There used to be SUSI on comparative public policy making and SUSI for women leaders, but now they have changed the SUSI women leaders to Madeleine Albright scholarship program, which is on the name of the former secretary of the United States Department. So आप अगर जो बॉयज हैं उनके लिए एक प्रोग्राम है विच इज सूसी कंपैरेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड गर्ल्स के लिए देयर आर टू अपॉर्चुनिटीज दे कैन अप्लाई फॉर बोथ प्रोग्राम्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो अंडर ग्रेजुएट जितने भी एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं उनका सेम होता है विच इज यू नीड टू बी इन योर सेकेंड ईयर ऑफ स्टडीज एंड इन योर सेकेंड लास्ट ईयर ऑफ स्टडीज इट मीन्स इफ यू हैव 4 ईयर स्टडीज अगर आप 4 साल का आपका बैचलर्स प्रोग्राम है तो आप अपने थर्ड सेमेस्टर में हो मिनिमम और मैक्सिमम आप अपने 6 सेमेस्टर में हो अगर आपका 5 ईयर्स का है तो आप अपने थर्ड में हो या फिर आप अपने 8 सेमेस्टर में हो तो अगर आपने अभी स्टडीज स्टार्ट की हैं तो आपको 2 सेमेस्टर आपके गुजर चुके हों और अगर आपने काफी देर पहले स्टार्ट किए तो आपके 2 सेमेस्टर रिमेनिंग हो देन दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो कि बहुत स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होता that you need to be in your second year of study or second last year of studies. So first of all, any applicant, those are applying for SUSI scholarship, they should know that if they are eligible to apply or not. Apart from this, which is again a very mandatory requirement कि आपके पास पाकिस्तानी citizenship हो, you should be the only Pakistani citizen. If you are a dual citizen, आपके पास किसी और country की citizenship है, even though you are living in Pakistan, you are not eligible to apply. आपके पास सिर्फ पाकिस्तान की citizenship हो, and you should be the resident of Pakistan at the time of application. थर्ड थिंग, आपने इससे पहले अप्लाई भरे किया हो जितने मर्जी प्रोग्राम्स के ऊपर बट आपने कोई और प्रोग्राम्स जो है वो अटेंड ना किए हो इधर इट्स सूसी दिस प्रोग्राम और इधर इज अनदर सूसी इधर इज एनी स्टेट डिपार्टमेंट फंडेड प्रोग्राम लाइक यू ग्रेड प्रोग्राम स्पेशली आपने उसके ऊपर जो है वो अपने मतलब ट्रेवल ना किया हो यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर अगर आपने वैसे ही टूरिज्म पर्पस के लिए या फिर फैमिली के लिए या फिर कुछ भी और रीजन के लिए if you have been to United States without on J1 visa which is for exchange programs so you are eligible to apply but most of the time because the actually the intentions of the exchange program is to explore United States तो अगर आप already states जा चुके हैं भले कोई भी reason हो भले आप अपनी family के साथ गए हो भले आप you went for the holiday that means that you have been to United States and you know how United States looks like how their culture is and how their policy actually everything how this works there so for that reason maybe it's a negative point for you कि अगर आप already US जा चुके हो तो आपको शायद it's not necessary but maybe they won't give you the edge on other applicant those have never been to United States so these are three things you need to be in your second year of study or second last year of studies then you need to be a Pakistani citizen you shouldn't have any other citizenship either from any other country and you should be the resident of Pakistan at the time of application and secondly you have never been to United States on particularly on State Department funded programs and maybe generally on any time like for your on particular reasons. You are muted, Ajay. सर आपने जो है SUSI exchange program भी अटेंड किया हुआ है उसके अलावा यू ग्रेड भी अटेंड किया हुआ है
तो उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपने पहले कोई जो है एक्सचेंज प्रोग्राम अटेंड ना किया हो, तो वो कैसे आपने दोनों अटेंड किए? So in my case, it was very unique क्योंकि जब मैंने apply किया था, when I was selected for the SUSI program, it was 2020, and then we were selected, and then we were supposed to go. Even we have started our visa process, but then the COVID-19 and pandemic hit the world, and because of that, हमारा program जो है जो 2020 में था, this was cancelled. Or 2021 maybe it didn't happen, and in 2022 I applied for the Ugrad exchange program. I was selected, and then I हाँ, went well, for Ugrad हुँ, exchange program in 2022 हुँ, first. Either I was हाँ, selected for SUSI program first, but I didn't went. I went on Ugrad exchange program, and after that, उसी साल में ही SUSI program जो है, it was held in University of Massachusetts. So that's why, because I was selected in 2020, because of COVID-19, I didn't go, and we attended the online exchange, online SUSI exchange programs in Pakistan. So that was the reason, because I was already alumni of the program, and the in-person component that happened in University of Massachusetts was just as a maybe a visit. That's only. There wasn't any learning component in Massachusetts at that time. So that's how I am sure that it won't happen again. There is no pandemic anymore, and if you are applying for any other program, they do check that if you have been to United States or not. So I was lucky. I was fortunate that I had this opportunity because of COVID-19. But I'm sure it won't happen again, and now they are very strict about it. Can you hear me? ज़ुबैर, एक होता है यू ग्रेड भी होता है, उसकी पर्सनल स्टेटमेंट जो होती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती हैं। उसके अलावा जो SUSI एक्सचेंज प्रोग्राम है, इसमें रिक्वायरमेंट्स उससे थोड़ी डिफरेंट है। तो हमने जो ये SOP लिखी थी यू ग्रेड एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, कैन वी कॉपी पेस्ट इट इन SUSI एक्सचेंज प्रोग्राम, या फिर वो डिफरेंट होनी चाहिए? So first of all, as you said, UGRAD program is different and SUSI exchange program is different. There are so much difference in UGRAD. UGRAD is a cultural exchange program, is an academic program. Comparative public policy making जो है, it's different. So you need to change your, और उन्होंने, their questions are actually different. मैंने भी application form जो you sent me, I just saw that कि जो questions हैं, जो 4 question UGRAD में होते हैं, it's different, and in SUSI they are different. So you should change your SOP. I did. जब मैंने SUSI में अप्लाई किया था in 2020, my personal statement was completely different, and when I applied for UGRADE, it was different, because you need to show that you are a suitable candidate for each exchange program you are applying. So one formula cannot be fitted everywhere, so you need to change it. What I can suggest, कि अगर आपने UGRADE की पर्सनल स्टेटमेंट लिखी है, so it's a good way for you that you have an initial starting point कि आपके पास already मौजूद है. So you will check कि आप उसमें से किस चीज को ले सकते हैं और किस चीज को आप नहीं ले सकते हैं, and then you need to alter your personal statement according to SUSI exchange program. SUSI के अंदर एक क्वेश्चन जो है which is actually not in the UGRADE application. It's about how you are going to contribute in the fellows, your fellows. This is not in the UGRAD exchange program. So आपसे असल में वो पूछना ये चाहते हैं, which is already एक और क्वेश्चन में भी उन्होंने पूछा है कि how you will be different अगर वो सारे policy makers, because that's actually assumption कि SUSI, because it's in comparative public policy making, so every people those are not studying public policy or maybe any sort of law, any sort of social science subject, or maybe you are studying engineering, doctor. I was an IT student. If you are an IT student, you just presume that you have nothing to do with public policy. Public policy आपके लिए नहीं है, ये public policy तो आप पढ़ते ही नहीं है. But we are associated with public policy. भले पॉलिसी कोई भी हो, हम पॉलिसी शेप्स भी करते हैं, और जो भी पॉलिसी बनती है उसका हम पे असर भी होता है. So you need to identify that how you think that you are gonna affect public policy in Pakistan. How do you think which policies need to be altered, need to be changed, need to be implemented? I saw
2 questions that are asked in this application form. We will talk about it later. और वो भी आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपकी पब्लिक पॉलिसी या फिर इवन पॉलिसी लेवल पाकिस्तान के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर, what understanding do you have? So this is your unique perspective about public policy that you will tell कि मैं जो हूँ वो maybe I am a doctor, I am studying MBBS and I have this particular concern about any sort of policy which has to do with medicine or maybe medical practice in Pakistan, and then you will say okay, I have this perspective and I will be a unique person in the whole cohort because you are from a different or diverse background. So you need to show that how, because they are not going to select everybody from public policy background, but they still need people who are actually maybe not expert but familiar with the public policy. So that's how you will tell them that you have the understanding of public policy in Pakistan. You know how this works, what are the loopholes in public policy in Pakistan, and then you will say that I am from that background particular. My future aspirations are this, and this. I want to work in this area, and this need to be improved in Pakistan. And that's how my particular perspective about this thing will be very helpful in the whole cohort, because I will bring a new or maybe a unique perspective in the whole cohort. So apart from this, first question is about who are you, what are your goals. It's pretty simple. Agar aapne Ugrad ka likha hai, so you would know who are you and what are your goals. Second one is about why are you, again it's about why are you competitive for this program. By every year, these programs, either it's SUSI or either it's Ugrad, either any other exchange program for any country, these are becoming very competitive. The reason is the situation in Pakistan. Another reason is the awareness. जब मैंने apply किया था, I used to be, I think in 2020 and before, when I came to know in 2018, 5 years back, उस वक्त ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता था. उस वक्त पाकिस्तान की situation भी इस तरह की नहीं थी कि people wanted to go outside and they were looking for this. But right now the situation, we all know that awareness is a very good thing. I'm not saying it's a bad thing. It's a good thing that many people know. So, and that for that reason the competition actually is increasing day by day. जब मैंने apply किया था उस वक्त there were only 5,000 applicants for SUSI, and I came to know last year it were 14,000. So you can see that 5,000 और 40,000 में कितना फर्क है. And I'm sure this year there will be more than 15,000 applicants. So that's how you need to show that अगर they are going to select only 30 people, 30 लोग अगर वो 50,000 लोगों में select कर रहे हैं, who are you? Why they select you? Why are you so competitive in 15,000 people? So you need to be sure. आपको पता होना चाहिए कि what unique qualities, what unique expertise, what unique experience that you bring on the table, and you will tell and you will convince them that I have this experience, I have this quality, I have this unique perspective, unique background, and that's why you should select me. That's how you are going to sell yourself. It's a very, again, its competition is very high. The success ratio is less than 1%. So अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इधर SUSI program, Ugrad program, you need to be very sure about yourself. आपको जो कुछ आप लिख रहे हो, it shouldn't be very generic thing कि आप लिख दो कि I am a leader. You should show that how you are a leader. Things should be very specific, that should make sense, and that's how you're gonna maybe make it. And the third question I already explained, your contribution in the fellow exchange. I think I already explained this one. And the last thing is about expectation for your personal and professional development. That's how you're going to tell how SUSI will be helpful for you. And for SUSI public policy program, you don't need to really say कि मैंने जो है बाद में policy maker बनना है in Pakistan, and अब जो है क्योंकि मैं SUSI program attend करूँगा तो I will be a very good policy maker. You won't be. If you are an engineering student, you are IT student, doctor, you are studying anything, you are not gonna be policy maker. They all know it. So how it will be helpful for your personal and professional development, that's up to you, that how you will actually explain कि after attending SUSI public policy making program, I will be maybe a computer scientist, or maybe I will be a programmer, I will be working as a freelance. But for that reason that I will study public policy making, I will be able to influence public policy in Pakistan. I will be able to increase the awareness for the people that how policy is shaping, how policy is implementing, and how policy is affecting them. So actually the reason why they are selecting you for comparative public policy making, these three words are very important. The word comparative is one of the most important words that we need to understand. Comparative means you are gonna go there and you will actually compare that how public policy works in Pakistan and how public policy works in states. So if you will go to states, you will know that everybody who is in states, they are concerned about public policy. They know how to raise awareness if they see some policies which are affecting them.
so they know how to go with that. But in Pakistan, we don't have this power. We don't know where these policies are coming from. If we are not agreeing with any policy, what to do, we don't know. So there will be some sort of case studies, because I attended SUSI program. I know कि आपको जो है वो 2-3 तरह की पॉलिसीज अमेरिका की और इस पाकिस्तान की, देयर विल बी अ कंपैरिजन. यू विल नोट नो कि पाकिस्तान में पॉलिसीज जो है वो कौन बनाता है, पाकिस्तान में पॉलिसीज शेप किस तरह होती हैं, कौन से स्टेट एक्टर्स हैं, कौन से नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान में पॉलिसीज को शेप करते हैं, किन की वजह से पॉलिसीज खराब होती हैं, किसी वजह से पॉलिसीज आउटडेटेड हो जाती हैं, कहाँ पे हमारी जुडिशरी के अंदर, हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर कहाँ पे लूप होल्स हैं, वेयर वी आर लेकिंग इन पॉलिसी. सो दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड कि अमेरिका के अंदर पब्लिक पॉलिसी किस तरह काम करती है, पाकिस्तान के अंदर किस तरह करती है. सो व्हेन यू कम बैक, you need to show that you will be working whatever you want to do. Maybe you will be continuing as a civil engineer if you are studying civil engineering, but again you will have the understanding of public policy making. और जब आप civil engineering जो कि आप पढ़ रहे हैं मिसाल के तौर पर, for instance, and then you will go in your field, you will be maybe a unique person, because you will have understanding of your own subject, which is civil engineering, for instance, but again you will have the understanding of public policy that you have studied in states, and you will be able to maybe टेक अ रेवोल्यूशन विच वी से. अगर कुछ चेंजेस चाहिए सिविल इंजीनियरिंग, अगर मिसाल के तौर पर पढ़ रहे हैं और वहां पे कोई स्टेप नीडेड है, आपको लगता है कि सिविल इंजीनियरिंग के पाकिस्तान में ये पॉलिसी जो है सही नहीं है, सो देन यू विल बी द पर्सन आफ्टर मे बी 5 years or 10 years who will initiate and who will be able to communicate with the government. अगर वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अगर वो जुडिशरी की पॉलिसी है, अगर वो लोकल लेवल की पॉलिसी है, you will have the understanding. So that's overall the whole purpose of public policy making program, that the people who are actually very good in their studies, to give them understanding of public policy, so they will be able to shape policies, and they will actually have the understanding of how policies are made in Pakistan and how they are affecting us. So that's the reason that you should change your whole personal statement for SUSI exchange program, because it's not nothing to do with cultural exchange program. It will be cultural exchange. You will go, you will see the culture, but their the importance of culture is not their priority. Their priority is public policy. So you need to show that you are very good maybe applicant for this public policy exchange program. Zubair, there is a question कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी हैं, लेकिन हमारी CGPA जो है वो डाउन है, लाइक 3 के आसपास है, 2.90 या 3.15 तक है. तो उस केस में हमारे जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं, दे विल हेल्प अस और नॉट? For any exchange program that you are going, maybe states or any other country, your CGPA does not matter. It doesn't really matter. Maybe for Ugrad हो सकता है कि आपकी CGPA मैटर करे, क्योंकि Ugrad इज एकेडमिक प्रोग्राम. उसके अंदर थोड़ा सा ये होता है कि आपने जाके अमेरिका में पढ़ना है, सो दे सी पीपल हु आर एबल टू स्टडी. अगर आपकी CGPA 2.5 है, यू आर वेरी एक्टिव, बट बिकॉज फॉर Ugrad प्रोग्राम आप अमेरिका में जाके एक सेमेस्टर पढ़ते हैं, सो दे विल नो कि यू वॉन्ट बी एबल टू maybe complete the semester. But for SUSI, it's not about studies. आप वहाँ पे सिर्फ स्टडी करने नहीं जाते. It's actually a fellowship program, or maybe as they say SUSI exchange program. इसका पढ़ाई से ताल्लुक इतना ज़्यादा नहीं है. So if you are not good at maybe your CGPA, that's not a very bad thing. It is actually maybe in your own circumstances, but for this particular exchange program, it's not समथिंग कि आपको उसके बारे में सोचना चाहिए कि मेरी CGPA कम है. दे रियली डोंट लुक एट योर CGPA. और मुझे शायद याद पता नहीं है कि मे बी दे आस्क और नॉट. आई डोंट थिंक दे इवन आस्क कि आपकी CGPA कितनी है. मे बी दे आस्क यू, बट इट डजंट रियली मैटर. The thing that matters that you mentioned is your extracurricular activities being a student, and beyond that extracurricular activities is your understanding कि आपको कितना ज़्यादा पता है, आप कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं. मे भी हो सकता है कि आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, बट वो रेलिवेंट ना हो SUSI comparative public policy प्रोग्राम से. मे बी आपने कोई whatever you did, maybe you just conducted some of the seminars, competitions, and then you were just in blood donations, in welfare program. They are very good extracurricular activities, but you need to show that how they are relevant, how they make you a very competitive person for this particular exchange program. So you need to find the relevance, और आपके जो emphasis है वो सिर्फ उन आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे होना चाहिए जो कि आपको स्टैंड आउट करें अपार्ट फ्रॉम द जंक ऑफ द पीपल हु आर अप्लाइंग. जुबैर, उसके बाद जब हमारी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है, उसके बाद का प्रोसेस आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसके बाद हमें किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है, और मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसके लिए जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं? लाइक अगर 30 स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो इसके लिए शॉर्ट लिस्ट जो है वो कितने स्टूडेंट्स होते हैं? आप जब आप अप्लाई करेंगे इन नवंबर, आई डोंट नो द डेडलाइन, बट या मे बी इन मिड नवंबर जब भी आप अप्लाई करेंगे, सो यू विल हैव
the shortlisting email maybe in late January or start of February. फरवरी के अंदर, मिड ऑफ फरवरी के अंदर इंटरव्यूज होते हैं. मेरा फरवरी के अंदर हुआ था और इन पर्सन हुआ था. आई एम नॉट श्योर कि आप ऑनलाइन होंगे या फिर इन पर्सन होंगे, बट माय इंटरव्यू वाज हेल्ड इन लाहौर. फिर आपका इंटरव्यू होता है एंड देन आफ्टर योर इंटरव्यू यू वेट टिल मे बी मई और अप्रैल, और अप्रैल के एंड में मई के स्टार्ट में आपको सिलेक्शन ईमेल आ जाती है. देन यू प्रोसीड विद योर वीजा एंड देन यू गो इन मिड ऑफ जून मेरे ख्याल से, एंड देन जुलाई के अंदर आपका जो है वो प्रोग्राम होता है. अगस्त के अंदर आप वापस आते हैं. सो अबाउट शॉर्टलिस्टिंग 30 लोग सिलेक्ट होते हैं. मुझे जितना याद है हमारे टाइम के ऊपर तकरीबन 100 लोग जो है वो शॉर्टलिस्ट हुए थे. मतलब 90 से 100 के दरमियान जो है लोग वो शॉर्टलिस्ट होते हैं एंड दे सिलेक्ट 1 पर्सन अमंग 3. सो अगर 90 लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो उसमें से 30 सिलेक्ट होने, तो आपके चांसेस जो है वो एक्चुअली 33% हैं, क्योंकि आप मे बी उन 3 में से एक आप हो सकते हैं. सो दैट्स अ गुड चांस. अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं तो आई डोंट थिंक अगर आपने अपनी एप्लीकेशन केयरफुली लिखी है, यू नो योर वर्थ. अगर आप इंटरव्यू जो होता है बेसिकली वो एक स्टेज होता है. इंटरव्यू इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट. 50,000 लोगों में से 90 में आना, इट्स वेरी बिग अचीवमेंट. अगर आप उसके अंदर आ गए हैं एंड देन दे डोंट सिलेक्ट यू, दैट मींस कि आपके एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसा था जो कि दे फाइंड आउट कि आप वैसे नहीं है. अगर आपने एप्लीकेशन के अंदर जो कुछ लिखा है, बहुत से लोग एग्जैजरेट करते हैं चीजों को, दे लाई इन देयर एप्लीकेशन. बहुत सी चीजों को वो बढ़ा चढ़ा कर लिख देते हैं, बट दे व्हेन यू सी द पीपल इन पर्सन इन इंटरव्यू यू केम टू नो कि दिस इज नॉट द सेम पर्सन. वो जब आपकी एप्लीकेशन पढ़ रहे होते हैं आप उनके सामने नहीं होते, दे आर जस्ट रीडिंग योर वर्ड्स और वो अज्यूम करते हैं कि आप वो हैं. लेकिन क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ऐसा भी करते हैं कि वो खुद नहीं लिखते, किसी एक्सचेंज अलुमनाई से लिखवा लेते हैं, किसी जगह से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो वो शॉर्टलिस्ट तो हो जाते हैं क्योंकि दे आर इम्प्रेस्ड विद योर एप्लीकेशन. बट व्हेन दे सी यू, दे सी दैट यू आर नॉट द पर्सन. आपने ये नहीं लिखा, आप उसको जो है ना मतलब डिफेंड नहीं कर सकते सिंपली. सो अगर आपने खुद लिखा है, आप वही है जो आपने लिखा है, आपने कोई चीजें बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखी, आपने झूठ नहीं बोला, आपने खुद लिखा है, आपको पता है कि आपने क्या लिखा है. बहुत से लोग कुछ लिख देते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने क्या लिखा है और वो भूल जाते हैं. सो इफ यू आर द पर्सन देन आई एम नॉट श्योर कि अगर आपको उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है, दैट मींस दैट वांट यू. उनको वो चाहते हैं कि आप उनको ज्वाइन करें. आपकी ही कोई रीजन होती है कि आप उनको फिर मौका देते हैं कि वो आपको सिलेक्ट ना करें. इट वेरी रेयरली कि वो आपको चाहें और आपको ना सिलेक्ट करें. ऐसे भी होता है कि SUSI एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर बाज औकात वो 30 से ज्यादा लोग भी सिलेक्ट कर लेते हैं. और बाज औकात इन 2020 हम लोग 30 लोग सिलेक्ट हुए थे और 2021 के अंदर उन्होंने सिर्फ 17 लोग सिलेक्ट किए थे, बिकॉज कि उस साल जो है एप्लीकेंट्स इतने क्रेडिबल नहीं थे. सो अगर उनको ना मिले, वो जबरदस्ती किसी को नहीं सिलेक्ट करते. अगर आप कॉम्पिटेटिव हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, मतलब उनके लिए सूटेबल हैं, तो वो 30 से ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर आप नहीं है तो उनको जरूरी नहीं है कि वो 30 उन्होंने करने ही करने हैं, वो 30 से कम भी कर सकते हैं. इन द सेम है पर इन यू ग्रेड का कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है कि हर साल 200 सिलेक्ट होते हैं. यू ग्रेड में कभी 250 होते हैं, कभी 100 होते हैं, और वो डिपेंड करता है कि वो आप कितने अच्छे हैं. कभी बहुत अच्छे लोग आते हैं तो वो सिलेक्ट कर लेते हैं, कभी नहीं आते तो वो कम लोग सिलेक्ट करते हैं. सो दैट्स हाउ आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो भी आपने लिखना है आपको पता होना चाहिए, आपने उसकी बैकग्राउंड स्टोरीज आपको पता होना चाहिए. इंटरव्यू के अंदर दे आस्क यू अबाउट एवरीथिंग, वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं. सो यू नीड टू बी श्योर. आप ऐसा नहीं कह सकते, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपने ये पर्टिकुलर प्रोग्राम किया था, आपके पास इस प्रोग्राम के लिए पैसे कहाँ से आए थे. सो आप सोच रहे हैं कि मैंने तो ये किया ही नहीं था, मैंने तो ऐसे लिखा है. सो दैट शुडंट हैपन. सो आपको हर चीज का पता होना चाहिए. यू शुड नो कि आपने अगर कोई प्रोग्राम, कोई भी आपने अपना एक्सपीरियंस लिखा है, अपना बैकग्राउंड लिखा है, यू शुड बी श्योर कि उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, आपने उसको किस तरह बताना है, बिकॉज दे कैन आस्क यू एनीथिंग. और इंटरव्यू होता ही क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए कि आप वही हैं कि नहीं है, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. जुबैर, जैसे आपने बात की कि एसओपी कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं एलुमनाई या फिर किसी कंटेंट राइटर से लिखवा लेते हैं, उसके अलावा आजकल एआई जो टूल्स हैं वो भी काफ़ी यूज में हैं. अगर कोई स्टूडेंट अपने आंसर्स जो है एआई टूल को यूज करते हुए लिखता है, तो क्या वो भी प्लेजरिज्म के अंदर ही आएगा और उनकी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट से ही डिस्कार्ड कर दी जाएगी? वैसे तो एआई का कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट हो एकेडमिकली तो वो एक्सेप्टेबल प्लेजरिज्म ही होता है. बट अकॉर्डिंग टू माय ओन अंडरस्टैंडिंग, अगर आप एआई यूज करते हैं टू जस्ट रिब्रेन आइडियाज तो वो अच्छा है. अगर आप उसको एज अ टूल यूज करते हैं, अगर आप ऐसा मतलब आपको पता है कि आप क्या हैं, फॉर एग्जांपल फॉर चैट जीपीटी, आप वहां पे गए, आपके पास आइडियाज हैं, यूजिंग एआई जनरेटेड टूल्स इज नॉट इट्स नॉट डिस्करेज. मेरा जो अभी आई मीन यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, मेरा जो एरिया ऑफ रिसर्च है फॉर माय डिसर्टेशन इज एक्चुअली द जनरेटिव एआई मॉडल्स, नेचुरल लैंग्वेज मॉडल्स. सो फॉर मी यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज मॉडल्स और मे बी जनरेटिव एआई इज नॉट अ बिग इशू. एकेडमिकली आज नहीं तो 5 से 10 साल बाद वी विल बी यूजिंग दिस टूल्स, और हम स्टूडेंट्स को सिखा रहे होंगे कि इनको किस तरह यूज करना है. राइट नाउ वी डिस्करेज,
हम चाहते हैं कि स्टूडेंट इन टूल्स को यूज ना करें, बट 5 से 10 साल के बाद हम स्टूडेंट को सिखाएंगे यूनिवर्सिटीज के अंदर कि इनको किस तरह यूज करना है. सो दे नो इट. इन अमेरिका मेनी प्रोफेसर्स एकेडमिकली उन्होंने इस चीज को मान लिया है कि अगर आप चैट जीपीटी, क्लाउडी, एनी सॉर्ट ऑफ जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, वेबसाइट आप यूज करते हैं, सो देयर इज नो इशू इन यूजिंग इट अनटिल एंड अनलेस के द आइडियाज दोज आर योर्स. अगर आइडियाज जो है वो आपने एआई से लिए हैं, वो देन इट्स नॉट योर आइडिया. अगर आप आइडिया जो है वो आपका खुद का अपना है, आपने सिर्फ हेल्प ली है इन जनरेशन और मे बी इन राइटिंग पर्टिकुलरली, क्योंकि आई डू यूज जनरेटिव एआई मॉडल, क्योंकि मेरा तो एज आई टोल्ड यू कि मेरा एरिया ऑफ स्टडी यही है. सो हाउ आई यूज देम फॉर ideas generation. Maybe it's not relevant, but I can suggest you, because ChatGPT it's actually a open source platform, so वहाँ पे privacy issues भी हैं, and ChatGPT actually give you the answers. But I will suggest you there is one more website which is Cloudy, CLAUDE.ai. If you will use that, actually that website, this is not like ChatGPT. अगर आप उसको कहेंगे कि write me a personal statement for SUSI exchange program, Cloudy won't write for you, but ChatGPT can write for you. So on Cloudy you can brainstorm the ideas. It's like you are discussing with your professors. So use AI generative models. I am not discouraging you, maybe some people, but I will say, okay, अगर आपके वो idea नहीं है, you are writing first time, you can just go to ChatGPT. You will ask, I'm applying for the SUSI exchange programs, can you help me out? And SUSI exchange उसके लिए आपके पास information आ जाएगी, you can use it. But at the end the thing is कि आपने जो भी लिखा है आपको defend करना है, and you can defend it when ideas will be yours. तो अगर आप about plagiarism, I don't think it's a plagiarism. Plagiarism is like you are copy pasting. अगर अपने ideas आपके अपने हैं, so ideas are yours, you are just using as a tool. हम और भी generative AI models use करते हैं, but we won't talk about it. Many people use Grammarly, which is again वो भी AI है, वो भी आपको artificial intelligence based software है. Then we use Quillboot to rephrase our ideas, and we have been using it for last so many years. But because of ChatGPT हमने सोचना शुरू कर दिया कि शायद ये जो है कोई plagiarism है. So ChatGPT को अगर आप as a tool use करते हैं तो just maybe refine your ideas or refine your personal statement. मैंने खुद जब personal statement, not this one, but recently कुछ personal statement थी that I submit to ChatGPT, and then I say maybe look into it and suggest me that how you can improve it, and ChatGPT can suggest you. You can just look at it कि आपको क्या चीजें जो है वो आपको tick your mind, आपको समझ में आती हैं, कौन सी चीजें नहीं आती. जो आपको समझ में आता है, so it's not a bad thing कि आपको अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप करें, but not like that कि आप सिर्फ ChatGPT गए और आपने कहा कि पर्सनल स्टेटमेंट लिख के दे दो, और वो लिख के दे दी और आपने सबमिट कर दी. That doesn't gonna work, because it's not a way. अगर आपने खुद लिखी है, आप सिर्फ उसकी हेल्प लेते हैं, तो टूल आप यूज करते हैं मे बी टू आप अपनी ग्रामर चेक करने के लिए, ग्रामर इंप्रूव करने के लिए, अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए, और आइडियाज जनरेट करने के लिए. आप अगर मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान में यू आर स्टडिंग साइकोलॉजी, अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, यू आर अप्लाइंग फॉर SUSI एक्सचेंज प्रोग्राम, नाउ दे हैव आस्क्ड यू अ क्वेश्चन अबाउट गिव एन एग्जांपल ऑफ पॉलिसी. आपको नहीं पता कि पाकिस्तान में कौन सी पॉलिसी है, सो देन आपने गूगल पे भी सर्च करना ही है पॉलिसी को. देन यू कैन आस्क ChatGPT कि अगर मैं आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, आई वांट टू अप्लाई फॉर SUSI एक्सचेंज प्रोग्राम, देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट व्हिच पॉलिसी इन पाकिस्तान नीड improvements, so can you suggest me some policies according to as a psychology students. So they will give you some of the examples, and you can see कि आपने कौन सी को choose करना है. So it's just as a part of research you can use AI generating models. That's not a plagiarism, that's actually a part of your research. और बजाय इसके कि आप गूगल पे रिसर्च करें, ChatGPT can give you more effective and more structured answers, so you can use it. That's not a plagiarism. So one more thing is कि जो हमारी यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स होती है वो हमारे सिलेक्शन प्रोसेस को इफेक्ट करती है, नहीं करती. लाइक मैं ख्वाजापुर यूनिवर्सिटी से हूँ, तो ये न्यूली डेवलप्ड यूनिवर्सिटी है, तो इसकी जो रैंकिंग है वो थोड़ी कम है, ठीक है. लाइक अगर हम देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की रैंकिंग से कंपेयर करते हैं, तो उसके मुकाबले में जो मेरी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है वो काफ़ी लो है. तो ये चीज़ें भी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर इफेक्ट करती हैं. आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, आपका कोई भी पर्टिकुलर बैकग्राउंड, कि आप किसी मतलब इस्लामाबाद से नहीं है, कराची से नहीं है, आप साउथ पंजाब से हैं, आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, आपकी बैकग्राउंड स्टडीज अच्छी नहीं है, आपकी फील्ड इतनी ज़्यादा, बहुत से लोग अपनी फील्ड को खुद अज्यूम कर लेते हैं. मिसाल के तौर पर कोई लोग अगर सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट जो खास तौर पर पढ़ रहे होते हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, दे ऑलरेडी अज्यूम कि हमारी फील्ड जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, ये तो फिर IT के लोग सिलेक्ट करते हैं या फिर इंजीनियरिंग के लोग सिलेक्ट करते हैं मे बी. सो आई कैन टेल यू कि ऐसा नहीं है. आपका कोई भी पर्टिकुलर बैकग्राउंड जो है, भले आपकी यूनिवर्सिटी हो, इट डजंट रियली मैटर फॉर देम. द थिंग दैट मैटर इज यू. हो सकता है कि आप अपने आप में आप बहुत बड़ी चीज हो, यू आर वेरी यूनिक, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सम रीजन आप अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले सके, तो ये आपकी जो है ना कोई खामी नहीं है.
मे बी अगर आप मिसाल के तौर पर हम्बल बैकग्राउंड से हैं, आपके पास इतने ज़्यादा फाइनेंसेस नहीं है कि आप किंग एडवर्ड के अंदर जाके ले सकें और आप किसी मकामी मतलब लोकल मेडिकल स्कूल के अंदर यू आर स्टडिंग एमबीबीएस, सो दैट्स नॉट एन इश्यू। आपकी रैंकिंग जो है वो मैटर नहीं करती, और अगर आप कुछ भी नहीं है, भले आप पाकिस्तान के नंबर 1 यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं, सो दे वोंट गोना सेलेक्ट यू, सो इट डजंट रियली मैटर कि आप जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, they will select you. I was in IUB. I was student of Islamic University of Bahawalpur. I was selected for. I am still now. I'm in Manchester, which is ranked. दुनिया के अंदर मैनचेस्टर जो है वो 7वें नंबर पर सिलेक्ट रैंक होती है, और पाकिस्तान की जो जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था वो दुनिया की 1000 यूनिवर्सिटीज में भी नहीं है। सो दे डोंट माइंड रियली कि आप किस यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, they mind के how good are you। so अगर आप नस्ट में पढ़ते हैं, if you are studying in fast which is not again आपके लिए कोई मतलब बहुत बड़ी एजाज की बात नहीं है, यूनिवर्सिटी होती है, it just means कि आप प्रिविलेज हैं तो आपने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। if somebody is not privileged they are not been able to, so it doesn't really make any significant impact at your application। it doesn't it not any part of it like आपको very proud, आपको बहुत प्राउड होना चाहिए कि you are आप नस्ट के स्टूडेंट हैं, you are student of maybe लम्स के स्टूडेंट हैं, then you will be definitely gonna select for association programs। it doesn't work like that। जुबैर, जब आप गए थे तो जो फाइनेंशियल कवरेज थी, क्या ये ईच एंड एवरीथिंग जो थी वो आपकी कवर हुई थी, या फिर आपको जो कुछ एक्सपेंसेस थे आपको भी बेयर करने पड़े थे? जब हम कहते हैं कि कोई प्रोग्राम फुली फंडेड है तो इट मींस इट फुली फंडेड, सो एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। अब लेकिन एक चीज है कि जब आप शॉर्टलिस्ट होंगे, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं इंशाल्लाह, सो यू विल गो टू लाहौर फॉर योर इंटरव्यू। फॉर इंटरव्यू यू नीड टू बेयर ये मनी। अगर आप इन पर्सन लाहौर जाते हैं मे बी मिसाल के तौर पर, तो फिर आपको वो फाइनेंसेस जो है आपको खुद करने पड़ेंगे, और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं सो दे विल रिम्बर्स। अगर आप इंटरव्यू के बाद सिलेक्ट नहीं होते सो दैट मनी विल बी वेस्टेड एक्चुअली, सो दैट्स ट्रू। बट आप अगर जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं सो यू गो टू यूनाइटेड स्टेट्स, ईच एंड एवरीथिंग इज पेड। और आपके पास मिसाल के तौर पर आई नो बिकॉज आई हैव बीन टू यू ग्रेड एंड SUSI बोथ एक्सचेंज प्रोग्राम, तो आपके पास इतने पैसे होते हैं कि इफ यू आर वरिंग अबाउट, आप उसमें से बचा भी सकते हैं। और आई नो मेनी पीपल बाय आईफोन फ्रॉम द सेम मनी। आप देख सकते हैं कि आईफोन पाकिस्तान में कितना जो है वो एक्सपेंसिव है, बट पीपल गो टू एक्सचेंज प्रोग्राम एंड दे बाय आईफोन फ्रॉम द सेम मनी दैट इज गिवन टू यू ऑन एक्सचेंज प्रोग्राम्स। सो यू कैन सेव मनी। आपको इतने ज्यादा पैसे मिलते हैं कि यू नीड टू वरी अबाउट। आई नो लॉट ऑफ पीपल, मैंने जो है जब आई वाज इन यू ग्रेड आई वेंट टू 15 यूनाइटेड स्टेट्स की जो 15 स्टेट्स हैं, आई विजिट with the same money that was provided to me on SUSI exchange program। I know a lot of my fellows, I just told you, they buy iPhone, they lot of shoppings from the same stipend that was given to you, so don't need to worry about कि आपके जो है कोई पैसे मतलब लगेंगे या आपको स्टाइपेंड बहुत कम मिलेगा। it will be enough for you। जुबैर, जैसे आपने मेंशन किया कि आप कुछ प्लेसेस पे गए थे, क्या थोड़ा आप एलाबोरेट कर सकते हैं कि आप इनके 5 वीक का ये प्रोग्राम होता है SUSI एक्सचेंज प्रोग्राम, तो आपने कितनी जगह विजिट की थी? क्योंकि जो यूग्रेड एक्सचेंज प्रोग्राम होता है वो होता है हमारे पास मैक्सिमम 4 to 5 मंथ का होता है, तो उसमें हमें जो है जगह ज़्यादा कवर होती हैं। तो SUSI एक्सचेंज प्रोग्राम में क्या प्लेसेस कम कवर होते हैं या फिर कोई ज़्यादा प्लेसेस भी कवर होते हैं? SUSI एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो आपके अपने ऊपर नहीं होता। आप सब लोग जो हैं वो एक ही यूनिवर्सिटी में जाते हैं, व्हिच इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स इन एमहर्स्ट कैंपस। आप वहाँ पे जाते हैं, एंड यूग्रेड एक्सचेंज प्रोग्राम आप कहीं पे भी जा सकते हैं। इट डिपेंड्स कि वो आपको कहाँ प्लेस करते हैं। सो दे आर बोथ आर डिफरेंट। सो SUSI एक्सचेंज प्रोग्राम्स का फ़ायदा या फिर नुकसान ये है कि SUSI के अंदर दे टेक केयर एवरीथिंग फॉर यू। आपको अलाउ नहीं होता कि आप अलाउ होता है मे बी इन योर फ्री टाइम, अगर आप चाहें तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं, बट अगेन आपके पास इतना टाइम नहीं होता। सो SUSI इज़ अ वेरी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सेम है। आप जाते हैं मैसाचुसेट्स में, फॉर फर्स्ट 4 वीक्स आपकी वहाँ पे स्टडीज़ होती हैं। आप एज़ अ स्टूडेंट सिर्फ आप सुबह उठते हैं, क्लास में जाते हैं, शाम को आप वापस आ जाते हैं। तो फर्स्ट 4 वीक्स यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन, बट अगेन देखना पड़ता है। बट इन लास्ट 2 वीक्स वो आपको खुद लेके जाते हैं। दे अरेंज अ बस फॉर यू, दे विल टेक यू फ्रॉम मैसाचुसेट्स टू बोस्टन, एंड देन फ्रॉम बोस्टन टू न्यूयॉर्क, एंड फ्रॉम न्यूयॉर्क टू न्यूयॉर्क टू वाशिंगटन DC। तो जब आप SUSI एक्सचेंज प्रोग्राम पे जाते हैं तो आप 3 यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्टेट्स हैं वो विजिट करते हैं, व्हिच इज न्यूयॉर्क, DC एंड देन बोस्टन। सो दीज 3 सिटीज आर इंक्लूडेड, और वो आपको मेरे ख्याल से शायद हार्वर्ड और मैसाचुसेट्स MIT जो है which are located in Boston, वो आपको वहाँ पे भी लेके जाते हैं। देन दे टेक यू टू जो UN जनरल असेंबली है, पाकिस्तान का मिशन है न्यूयॉर्क के अंदर SUSI एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर, सो वो आपको वहाँ पे खुद लेके जाते हैं। एंड फॉर मी इट्स अ गुड थिंग कि आपको जो है वो खुद सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि यूग्रेड के अंदर एवरीथिंग यू नीड टू अरेंज। लॉट ऑफ पीपल गो टू यूग्रेड, दे डोंट गो आउट ऑफ देयर यूनिवर्सिटीज। बहुत से लोग हैं जो कि कहीं पे नहीं जाते। सो जब कोई लोग हैं जो यूग्रेड पे जाते हैं, दे विजिट सो मेनी प्लेसेस।
इन SUSI program your experience will be the same as your all fellows, क्योंकि SUSI के अंदर ऐसा नहीं है कि आपके कुछ fellows जाएंगे कुछ नहीं जाएंगे कुछ वहीं पे रहेंगे. So SUSI के अंदर they take you everyone as the same places. वो आपको बोस्टन लेके जाते हैं. They will take you to one of the most famous and renowned universities, MIT and Harvard, and then they will take you New York. आप 3-4 दिन New York में रहते हैं. वहाँ पे they will take you to UN General Assembly and then Pakistani High Commission in Washington DC. वो आपको DC लेके जाते हैं. वहाँ पे they will take you to White House and then Lincoln Memorial, और वहाँ पे आपको सारी चीजें जो है you go with your all fellows. So that's how that works. In 4 weeks वहाँ पे classes होती हैं मैसेच्यूसेट्स के अंदर. You attend those classes from diversity of topics, maybe on leadership, and then you study policy making, little bit of policy making, and then some sort of rights movement. तो वो 4 weeks जो है वो आप मैसेच्यूसेट्स के अंदर as a student रहते हैं and you study there, and those are very engaging, very helpful classes because I know कि SUSI के अंदर जो learning part है apart from traveling, it's very important, it's very unique, it's very helpful. तो जब आप वहाँ पे जाएंगे for 4 weeks, you will have very good understanding. मैसेच्यूसेट्स के अंदर there are renowned professors, जिसके अंदर Nobel laureates भी हैं, जिसके अंदर one of the most greatest scientists हैं, political scientists हैं, social scientists हैं, जो कि आपसे वहाँ पे आगे बात करते हैं, and you get to learn so many things about public policy making. So both from point of view, either is part of our excursion कि आप घूमना फिरना चाहते हैं, it's a great program, or is a part of our learning. Both of SUSI exchange program is very good for people who don't want to waste their semester, because for UGRAD you need to sacrifice your 1 semester. बहुत से लोगों के लिए UGRAD जो है वो इसका नेगेटिव पॉइंट यही होता है कि उनको जो है 1 सेमेस्टर जाया करना पड़ता है अपनी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का, और खास तौर पे 2 भी जाया करना पड़ जाते हैं. बट SUSI जो प्रोग्राम है वो क्योंकि समर ब्रेक के अंदर होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, सो इट्स अ वेरी गुड एंड हेल्पफुल फॉर यू कि आप जो है वो सिर्फ 6 वीक्स के लिए जाते हैं. आपको स्टडीज अपनी सेक्रीफाइस नहीं करनी पड़ती, आपके हॉलीडेज आप वहाँ जाते हैं. आप वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस जिसका सबको पता है, बोस्टन, न्यूयॉर्क एंड DC, आप वहाँ पे भी जाते हैं, एंड देन यू गेट टू स्टडी फ्रॉम रिनाउंड प्रोफेसर्स. दोज आर एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ मैसेच्यूसेट्स, एंड सम प्रोफेसर्स केम देयर आउट ऑफ whole United States, not from Massachusetts only. So this is a great program. जुबैर, आपने जो है काफ़ी एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी अटेंड किए हुए हैं. उसके अलावा आप करंटली जो है एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप के थ्रू जो है मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं. तो आपके लिए कैसा रहा? आपके लिए इजी रहा या फिर आपको इसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ी? I think generally life में कोई चीज़ भी आसानी से नहीं मिलती. You need to struggle. Many people don't see. People just see you when you are successful, but people don't see when you are actually struggling. So when you are successful, you have a lot of stories to tell people ke ye, but agar you are not successful, nobody listen to your stories. So I think so, because I was before applying for SUSI exchange program, I started my journey in 2018 when I founded my own organization. We didn't talk really about volunteer experience or extracurricular activities. Those are really important, and because of those activities I am here. I have been to maybe a lot of countries. I have been to more than 10 or 12 countries. Yesterday I came from Finland. I was in Finland. I think you might know, I was talking to you, and then that's why we extended this one. So why I got this opportunity, I have some scheduled plans for some other countries that I'm going in next month and then next month. Right now I'm at the Chevening Scholar in the UK. It's not easy, but when you start doing it, it's easy. So anything which is easy is when you start doing it. If you will start doing it, everything will be easy. If you will just thinking about it and just thinking that it's really hard, you need to have a courage. 5,000 लोगों में से 30 लोगों में आना, आपको अंदर बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए. इट नॉट लाइक दैट कि आप जो है वो सिर्फ मजाक के अंदर 5,000 लोगों में से 30 के अंदर आ जाएंगे. सो दैट्स योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. अगर आपके अंदर ये करेज है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि यू आर वेरी गुड, एंड दैट्स यू नीड टू एक्चुअली रिमाइंड योरसेल्फ कि यू आर एक्चुअली. सो आई विल से कि अगर आप SUSI exchange प्रोग्राम पे चले जाते हैं या फिर आप UGRAD पे जाते हैं, that will be very helpful for you when you will apply for master's scholarship. क्योंकि मेरे लिए how I get this Chevening scholarship, which is again it is one of the most competitive scholarship in the world. Chevening का जो maybe you might be aware or not, but people who know, Chevening is one of the, I will say it's biggest competitive scholarship in the world. क्योंकि Chevening जो है is highly prestigious scholarship. So how I get it, because I have this experience. I've been to United States, I've been to SUSI. So just don't say SUSI or UGRAD or any other exchange program when you are undergraduate student as your last thing.
आप ये ना सोचो कि मैंने SUSI पे जाना है और ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। जस्ट थिंक एज अ स्टेपिंग स्टोन। आपने ये सोचना है कि मैंने SUSI एक्सचेंज प्रोग्राम इसलिए जाना है ताकि मेरी प्रोफाइल जो वो बिल्ड हो, ताकि आफ्टर दैट जब मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करूँ तो आई विल हैव एक्सपीरियंस। आई नो लॉट ऑफ पीपल जो कि यूग्रेड पे जाते हैं, SUSI पे जाते हैं, इट बिकम वेरी ईजियर फॉर देम टू गेट मास्टर्स स्कॉलरशिप, क्योंकि उनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है, उनकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाती है। सो अगर आप अंडर ग्रेड के अंदर आपको ये मौका मिलता है कि आप SUSI पे या यूग्रेड पे चले जाते हैं, देन आई एम श्योर कि आप 50% आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको मास्टर स्कॉलरशिप मिल जाएंगी, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव दिस बैकग्राउंड और आपको ऑलरेडी सबसे बड़ी बात यह है कि आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाते हैं पर्सनल स्टेटमेंट राइटिंग के अंदर। स्कॉलरशिप विन करना जो है इट्स एन आर्ट और साइंस। ये ऐसा नहीं है कि आपको जो है अगर कुछ भी नहीं आता और आप ले लेंगे। आपकी पढ़ाई अपनी जगह है, बट स्कॉलरशिप हासिल करना जो है ये अपने आप में एक पढ़ाई है, ये अपने आप में एक स्टडीज है, अपने आप में एक एक्सपर्टीज है जो कि आपको चाहिए होती है। सो इफ यू विल इन्वेस्ट योर टाइम, maybe I suggest people to watch videos on YouTube, search on Google, invest 2 or 3 months actually for each exchange program that you are applying. I remember जब मैं SUSI के लिए first time apply कर रहा था, I spent the whole year. I went to my university in 2018. मैंने 2018 में एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में। मुझे उस वक्त नहीं पता था about SUSI and UGRAD. And fortunately, in my first month, जब मैं पहली first month I was in university, I was just using Facebook as we all use. और मैंने Facebook पे जो है एक देखा हमारी यूनिवर्सिटी के ही एक स्कॉलर को, जो कि उस वक्त SUSI एक्सचेंज प्रोग्राम पे थे। सो आई केम टू नो, मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा कि ये SUSI एक्सचेंज प्रोग्राम है। ये मेरा दोस्त जो है वो इस टाइम जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है। जब वो वापस आया तो मैंने उससे पूछा, और उस वक्त तकरीबन 7 से 8 महीने पड़े हुए थे एप्लीकेशन को। आई डिडंट वेस्ट माय टाइम कि चलो मैं जब एप्लीकेशन ओपन होगी तब मैं कोशिश करूंगा, बिकॉज आई टॉक टू हिम एंड ही टोल्ड मी लाइक दिस इज SUSI एक्सचेंज प्रोग्राम, एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट फॉर 7-8 months, एंड I am very lucky कि I got the SUSI exchange program in my first attempt. मैंने 2-3 साल अप्लाई नहीं किया। I applied first time, I got it. Then I applied first time for UGRAD, I get it. I applied for Chevening Scholarship program for first time, I get it. And the reason I will tell you why I get everything in first attempt, because I spend a lot of time on it. अगर आप पता चलता है जब एप्लीकेशन ओपन हो जाती है उसके बाद आप अप्लाई करते हैं, सो आप इट्स वेरी रेयर कि आपको जो है वो आप सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि 2-3 महीनों के अंदर आपको इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। लेकिन अगर आपको 1 साल आप मेहनत करते हैं, अगर आपको पता है, सो दैट मीन्स कि आपको जो है वो आप प्रायर अंडरस्टैंडिंग आपके पास है। तो that's the reason I still suggest people to look at everything which is available on internet. Google के ऊपर बहुत से आर्टिकल्स हैं SUSI एक्सचेंज प्रोग्राम्स के, YouTube के ऊपर बेशुमार वीडियोस हैं, आप वो देखें। जिस तरह नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, आप वेबिनार्स अटेंड करें, टॉक टू सम पीपल। अगर आपके कोई इन पर्सन आपके कुछ जानने वाले हैं जो SUSI एक्सचेंज प्रोग्राम में गए हैं, टॉक टू देम, हैव कनेक्शन विद देम, एंड देन होपफुली एक्चुअली द थिंग इज अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग। आप जितनी आप जानेंगे उतना आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, एंड उतना जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपके आइडियाज को इन्फ्लुएंस करेगी। अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप SUSI एक्सचेंज प्रोग्राम को आपने समझा ही नहीं है कि असल में ये चीज क्या है, असल में वो चाहते हैं, आपने ऊपर ऊपर से देखा कि SUSI एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो अक्सर के अंदर मिसाल के तौर पर जो वर्ड्स होते हैं उनकी वो मीनिंग नहीं होती जिस तरह वो लिखे होते हैं। आप देखेंगे कि SUSI एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ है कि इट्स फॉर पीपल हु हैव लीडरशिप क्वालिटी। सो आपको ये लगा क्योंकि मैं भी लीडर हूँ, मैंने एक ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो कंडक्ट किया था, तो मैं लीडर हूँ, तो मैं जो है बिल्कुल जबरदस्त मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। आपको इन डेप्थ चीजों को समझना पड़ता है कि व्हाट दे मीन अबाउट लीडरशिप। उनकी नजर में लीडरशिप क्या है। आप एक ब्लड डोनेशन कैंप करने के बाद, एक वेलफेयर ड्राइव करने के बाद, एक प्रोग्राम अटेंड करने के बाद, एक सेमिनार कंडक्ट करने के बाद, यू डोंट बिकम अ लीडर। मे बी आपने कुछ भी ना किया हो और स्टिल यू आर अ लीडर। सो हाउ यू विल गेट दिस अंडरस्टैंडिंग, जब आप रिसर्च करोगे, जब आप बहुत ज्यादा चीजों को इन डेप्थ जानना शुरू कर दोगे, तो फिर ग्रेजुअली ये चीजें जो है वो आपके आइडियाज को इन्फ्लुएंस करेंगी, और जब आप लिखने बैठोगे तो फिर आपके अल्फाज के अंदर वो चीजें नजर आएंगी कि आपके पास आइडिया है। आई नो कि जब आप पब्लिक पॉलिसी के जो क्वेश्चंस हैं SUSI के अंदर जब आप लिखने बैठते हैं तो आपको समझ में नहीं आता क्या लिखें, लेकिन जब आप रिसर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो आपके आइडियाज जो है वो आपके इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाएंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ, जो कि आप अपने गूगल रिसर्च से या फिर आप चैट GPT से या कहीं से भी आप जो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, आप लोगों से बात करेंगे, टॉक टू योर प्रोफेसर्स, टॉक टू योर टीचर्स। अगर आप SUSI एक्सचेंज प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, आपके दोस्त हैं जो कि सारे अप्लाई कर रहे हैं, इट्स नॉट अ कंपटीशन एक्चुअली। आप उनके साथ बात करें, उनसे पूछें कि वो क्या 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 आइडियाज उनके हैं, आपके क्या हैं। So just invest yourself for 2 or 3 months. Just think about it. I remember I used to do research every day. Every day when I get time, I joined a lot of Facebook groups on Facebook जिसके ऊपर alumni जो थे वो बात करते थे. I used to think every day my understanding was getting changed. पहले दिन मुझे समझ में आता था कि शायद SUSI प्रोग्राम ये है और मैंने अपनी जो पर्सनल स्टेटमेंट उसके अंदर ये लिखना है. But the second day I think I listen to somebody and then I get new understanding. एंड इट्स गुड थिंग कि आप जो पहले दिन सोचते हैं लास्ट दिन आप वही नहीं सोच रहे होते। सो आपको देखना ये होता है कि कौन सी चीज जो है इट मेक सेंस टू यू और कौन सी चीज जो है डजंट मेक सेंस।
तो कोई चीज़ जिस तरह चीज़ें आपको सेंस आपकी बनाती जाए, यू नीड टू चेंज, और एट द एंड जो है वो आपके आइडियाज़ जो है वो एज़ अ एक्सपर्ट आप जो है वो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आप जो पर्सनल स्टेटमेंट अगर आप पहले 1 साल आप इन्वेस्ट करते हैं SUSI के अंदर, आई रिमेंबर एज़ आई टोल्ड यू, मैंने SUSI की पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो 1 साल मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था। बट फॉर यू ग्रेड आई जस्ट इन्वेस्टेड मे बी 1 और 2 वीक्स, बिकॉज़ मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पता चल गया था कि पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है, क्यों लिखना होता है, क्या लिखना होता है, किस तरह स्ट्रक्चर करना होता है। एंड देन फॉर Chevening Scholarship or other scholarship that I went to, I don't spend too much time because I started in 2018. अब ये 2023 का एंड है. I am writing personal statement from last 5 years. I am reviewing personal statement. Now, maybe I'm not expert, but I have a good understanding about personal statement. So just invest your time. अगर आप, I will suggest some more thing. अगर आप SUSI में अप्लाई करते हैं, यू डोंट गेट दिस अपॉर्चुनिटी, अनफॉर्चुनेटली आपने अप्लाई किया, 2 साल आपने अप्लाई किया, आपको नहीं मिला, लेकिन क्योंकि आपने 2 साल अप्लाई किया, आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, आपने 2 साल पर्सनल स्टेटमेंट को लिखा है, सो अगर आपको SUSI में नहीं सिलेक्ट होते, बिकॉज़ इट्स कॉम्पिटिटिव, राइट? सो हर बंदा सिलेक्ट नहीं होता इसके अंदर, और इसके अंदर आपकी खामी नहीं है कि अगर आपको उन्होंने नहीं सिलेक्ट किया तो इसके अंदर आपकी कोई मतलब आप में अंदर कोई खामी है। मे बी बिकॉज़ द एप्लीकेशंस वे आर सो नाइस, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे एप्लीकेशन कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने नहीं सिलेक्ट किया। बट 2 साल जो आपने SUSI में इन्वेस्ट किए हैं, जिसके अंदर आप अनसक्सेसफुल रहे हैं, ये चीज़ें जो है वो आपको हेल्प करेंगी जब आप मास्टर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, अगर आप अप्लाई करेंगे तो। सो आपका टाइम ज़ाया नहीं होता। पीपल सी कि हमने SUSI में अप्लाई करना है, फिर वो सोचते हैं कि यहाँ से 30 लोग सिलेक्ट होते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ, तो चल छोड़ दो। बट आई स्टिल सजेस्ट देम कि अप्लाई, राइट योर एप्लीकेशन। अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते, दैट्स अ लर्निंग फॉर यू, कि आपको पता चलता है कौन सी चीज़ें आपने लिखी थी जो कि वर्क नहीं कर रही हैं आपके लिए। एंड देन आप अपना अंडर ग्रेड स्टडीज के अंदर आप ये एक्सपीरियंस करें, जितने भी एक्सचेंज प्रोग्राम्स आते हैं हम अप्लाई करें, आपको शायद कुछ आप सिलेक्ट हो जाएं, कुछ में ना भी हो, बट ये सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं, जो कि आपने लिखा होगी, मेरे पास 2 इस तरह के फुल रजिस्टर्स हैं जो कि मेरी पर्सनल स्टेटमेंट से भरे पड़े हैं। जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था तो मैं रोजाना लिखता था, और फिर मैं लिख के रोजाना आइडियाज को, सो आई हैव 2 फुल रजिस्टर्स एट नोट राइट नाउ एट माय होम, जिसके अंदर मैंने सारे आइडियाज जो हैं वो अपने लिखे थे। एंड देन आफ्टर दैट, जब भी किसी और स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना होता है, आई हैव माय ओन कंटेंट, मुझे फिर रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। आई हैव डिड होल रिसर्च ऑन पर्सनल स्टेटमेंट राइटिंग, एसेज राइटिंग, मोटिवेशन लेटर राइटिंग, LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, स्कॉलरशिप्स के लिए जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सो यू नीड टू हैव एक्सपर्ट, एक्चुअली आपको ये चीजें जो है वो सीखनी पड़ती हैं। एंड देन आफ्टर दैट यू विल बी वेरी कंफर्टेबल, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आप जहां भी अप्लाई करोगे आपको पता होगा कि जो है यू आर वेरी गुड टू गो, और आप सिलेक्ट हो जाओगे। थैंक यू जुबैर। अब लास्ट में हम Q&A सेशन करते हैं, तो जितने भी व्यूअर्स हैं वो अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं एक चीज सजेस्ट कर देता हूँ। एक क्वेश्चन विच फर्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज आई वाज थिंकिंग मे बी वी विल बी मोर टॉकिंग अबाउट जो SUSI के 2 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो मुझे SUSI के पूछते हैं वो इन 2 क्वेश्चंस का ही पूछते हैं कि ये क्या है। So I can just for 2 or 3 minutes I can explain. First question is very simple. One initiative that you would मैंने क्योंकि लिखे हैं ये क्वेश्चन अभी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल है, यू नो कि कौन सी जो है वो पॉलिसी है। सेकंड वन इज बिट डिफिकल्ट, जो कि मुझे लगा कि आई कैन एक्सप्लेन समथिंग व्हिच इज गिव एन एग्जांपल ऑफ पॉलिसी व्हिच नीड इंप्रूवमेंट्स इन पाकिस्तान। सो पीपल स्ट्रगल कि हमने कौन सी पॉलिसीज के बारे में जो है वो यहाँ पे बात करनी है। आपको एक पॉलिसी उठानी है, एक पॉलिसी आपको सिलेक्ट करना है जिसकी आपने एग्जांपल देनी है, एंड यू विल टॉक अबाउट कि उसके अंदर इंप्रूवमेंट कहाँ है। अगर आप पोजीशन के ऊपर होते, इफ यू वर अ लीडर, जो कि लिखा हुआ है हाउ वुड यू चेंज, आप उसको किस तरह चेंज करते, आप उसको किस तरह इन्फ्लुएंस करते। सो व्हाट आई कैन सजेस्ट अकॉर्डिंग टू माय ओन एक्सपीरियंस कि आपको कौन सी पॉलिसी सिलेक्ट करनी चाहिए। देयर आर 2 एक्चुअली वेज कि आप उसको देख सकते हो। फर्स्टली, आप कोई भी जनरल जो है वो पॉलिसी ले लो जिसका आपकी स्टडी से ताल्लुक ना हो। मिसाल के तौर पर, आई नो यू आर फ्रॉम माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान, सो अगर व्हाट आर यू स्टडीइंग, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज योर फील्ड ऑफ स्टडी। My field of study is biotechnology. Okay, so you are studying biotechnology. Now you have 2 choices. Either you can relate one policy that you are going to choose with biotechnology, जिसका आपकी स्टडीज हैं, आप बताएंगे कि बायोटेक्नोलॉजी मैंने पढ़ी है और वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में भी डिफ्यूजन ऑफ इक्विपमेंट्स इज अ पॉलिसी, नॉट उसके अंदर कोई पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स है, दे आर नॉट डिफ्यूज इन अ वे, एंड देन यू विल टॉक अबाउट इट दिस वन। एंड सेकेंडली, आपके पास दूसरी चीज जो है कि आप उसको आप जनरली लेके जाओ और आप वहाँ पे बात करो कि बिकॉज आई एम फ्रॉम माइनॉरिटी बैकग्राउंड, और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के लिए कोई पॉलिसीज नहीं है, क्योंकि सिलेक्ट आपने एक करनी है, आप हर पॉलिसी के बारे में बात नहीं कर सकते। और इधर यू विल से कि मैं साउथ पंजाब से हूँ, साउथ पंजाब के अंदर क्लाइमेट का इशू है, साउथ पंजाब के अंदर गुर्बत बहुत ज्यादा है, और बहुत से लोग जो हैं एक्चुअली
मैंने भी जो किया था, मैंने एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर बात की थी। मेरा बैकग्राउंड आईटी में था एंड आई बिलोंग टू साउथ पंजाब, सो आई वाज, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन हमारी एप्लीकेशन के अंदर भी था, सो आई वाज थिंकिंग मैं किस पॉलिसी के बारे में बात करूं। सो देन आई रियलाइज कि द पॉलिसी आई चूज वाज एजुकेशन। पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन का निज़ाम है उसके अंदर मुझे अब याद नहीं है कौन सी पॉलिसी थी एजुकेशन की, बट आई रिमेंबर कि इट वाज अबाउट एजुकेशन के पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन के बारे में जो पॉलिसीज हैं उनको किस तरह इंप्रूव किया जा सकता है। खासतौर के ऊपर उस वक्त जो है वो नेशनल सिंगल करिकुलम जो है, क्योंकि उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, तो वहाँ पे उस वक्त बहुत ज्यादा जो है बातें हो रही थी कि पाकिस्तान के अंदर सिंगल नेशनल करिकुलम होना चाहिए। सो मुझे जितना याद पड़ता है शायद मैंने सिंगल नेशनल करिकुलम के बारे में ही लिखा था कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन का जो सिंगल नेशनल करिकुलम है उसके अंदर कौन सी पॉलिसी की जरूरत है, इधर ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और अगर मैं एज अ लीडर मैं पॉलिसी बना रहा होता तो मैं सिंगल नेशनल करिकुलम बनाता और किस तरह बनाता और नहीं बनाता। सो यू कैन सी आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ आईटी। मैं आईटी के बारे में बात कर सकता था, विच इज एक्चुअली माई बैकग्राउंड। आई लिव इन साउथ पंजाब, मैं क्लाइमेट के बारे में बात कर सकता था, मैं गुर्बत के बारे में बात कर सकता था। देयर वर लॉट ऑफ पॉलिसीज, बट आई चूज द पॉलिसी विच आई फील कि मैं अपना यूनिक पर्सपेक्टिव उसके अंदर बता सकता हूँ। सो दैट्स माई सजेशन फॉर यू। आप पॉलिसी जो भी सिलेक्ट करें केयरफुली सिलेक्ट करें और वो बताएं जिसको आप यू फील इन योर हार्ट, आप जिसको कहते हैं ना कि इट्स माय हार्ट थिंग, कि आप जो है वो दिल से आपके चीजें निकलें और आपको दिल से आपको लगता होगा ये पॉलिसी जो है वो इम्पैक्ट करती है। क्योंकि आई एम रियली डिवोटेड टू एजुकेशन राइट नाउ, आई एम स्टडीइंग एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी व्हिच इज माय फील्ड। सो दैट्स व्हाई आई चूज एन एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर, बिकॉज एज अ स्टूडेंट जितनी भी पॉलिसीज एजुकेशन के बारे में है वो आपको इफेक्ट करती हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड वे कि आप इजी वे आपके लिए यही है कि आपको समझ में ना आए कि कौन सी पॉलिसी आपको चूज करना चाहिए, आप एजुकेशन की कोई भी पॉलिसी ले सकते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी की कोई, बिकॉज आई थिंक इट्स अबाउट नेशनल लेवल पॉलिसी, आई एम नॉट श्योर कि नेशनल लेवल है या फिर आपकी कोई भी पॉलिसी आप ले सकते हैं। सो चूज पॉलिसी। माई सजेशन वुड भी, अगर आपको कोई समझ में ना आए तो गो फॉर एजुकेशन। पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन के निज़ाम के अंदर बहुत सी पॉलिसीज हैं जो कि आउटडेटेड हैं, जिसके अंदर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। पाकिस्तान का एजुकेशन निज़ाम जो है वो बहुत मिसाल के तौर पर, आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड बट इट्स एक्चुअली हॉरिबल, इट नीड्स लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो बीइंग अ स्टूडेंट यू आर डायरेक्टली affected by those policies जो कि पाकिस्तान के एजुकेशन के बारे में है। सो यू कैन टॉक अबाउट दोज पॉलिसीज कि एजुकेशन के अंदर ये चीज़ों की ज़रूरत है। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, अगर आप उसको अपनी फील्ड के साथ रिलेटेड करना चाहें यू कैन डू इट। अगर आप अपने बैकग्राउंड, आपकी इथनिसिटी, आपका मिसाल के तौर पर आपका इलाका, अगर आप बलूचिस्तान के अंदर मिसाल के तौर पर रहते हैं, आप बलूचिस्तान के अंदर कोई पॉलिसी के बारे में बात करना चाहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर ये मतलब मसाइल है, ये पॉलिसी है जो कि ठीक होनी चाहिए, दैट्स अ गुड वे। सो इट्स अप टू यू। मैंने 3-4 आपको डोमेन्स बताई हैं। यू कैन गो फॉर एजुकेशन, you can go for your own field, you can go for like you can talk about you are from ethnicities, your religion, क्या आप किसी ethnic minority से हैं, religious minorities हैं, those policies you can talk about it, and then you can go for your own province based, क्या आप किसी particular region के अंदर रहते हैं और वहाँ पे जो national level की policies हैं आपको इफेक्ट कर रही हैं, so you can talk about those policies. सॉरी मदनी, आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किए थे वो आपकी जो फील्ड ऑफ स्टडी थी उससे बिल्कुल अपोजिट थे। लाइक आपने एकदम अपोजिट टॉपिक चूज किया। लाइक मेरी बायोटेक्नोलॉजी है तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा पब्लिक हेल्थ की तरफ है ना, कि पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज जो है उनको कैसे इंप्रूव करना है, या ड्रग डेवलपमेंट है या मेडिसिन जो है इसकी तरफ है। तो बेहतर ये रहेगा कि हम अपनी फील्ड की तरफ जाएं या फिर जो हमारा एरिया है हम उसमें से अपना टॉपिक चूज करें। मैंने देखिए अभी यही एक्सप्लेन किया कि बेहतर वही रहेगा जो कि आपको लगता है बेहतर है। हर किसी के लिए मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मेरी फील्ड ऑफ स्टडी आईटी जो है, आई स्टडीड आईटी बट आईटी वाजंट समथिंग फॉर मी, क्योंकि आई एम नॉट स्टडिंग आईटी राइट नाउ, आई एम स्टडिंग एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। आई एम मोर स्टडिंग एजुकेशन, और एजुकेशन के अंदर भी आई एम वर्किंग ऑन नेचुरल लैंग्वेज मॉडल्स और जनरेटिव एआई के पाकिस्तान AI जो है how it is influencing education. So I'm actually doing technology, but my focus is education. So that's why, because I was devoted to education, I choose national single curriculum. I feel whatever I talk about it, I don't really remember now, but it was about national single curriculum जो है, और in my opinion, because I know, मैंने यही कहा था कि पाकिस्तान के अंदर नेशनल सिंगल करिकुलम नहीं होना चाहिए, because it's not a way to maybe go for educational inequalities जो पाकिस्तान के अंदर है। अगर आप सिंगल करिकुलम बना देंगे इससे आप इनइक्वालिटीज जो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अंदर है, ये ब्रिज गैप जो है ना, गैप उसको ब्रिज नहीं करेंगे बल्कि ये गैप को ज्यादा बढ़ाएंगे जब आप करिकुलम को सिंगल कर देंगे, और वो फिर सक्सेसफुल भी नहीं हुआ। आई डोंट थिंक पाकिस्तान के अंदर जब सिंगल नेशनल करिकुलम आया है वो पॉलिसी सक्सेसफुल रही है नहीं रही, इट्स नॉट अ सक्सेसफुल पॉलिसी। सो बिकॉज आई हैड अंडरस्टैंडिंग, मुझे उसके बारे में पता था, दिस वाज कमिंग फ्रॉम माय हार्ट, दैट्स व्हाई आई चूज दैट पॉलिसी।
अगर आपको लगता है कि आप बायोटेक्नोलॉजी एज यू टॉक अबाउट पब्लिक हेल्थ, इट्स अ वेरी गुड टॉपिक। पब्लिक हेल्थ के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत सी पॉलिसीज हैं जिसके अंदर इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, आप वो चूज कर सकते हैं। इट्स अगेन रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ स्टडी, बट अगेन आप कोई भी चूज कर सकते हैं। मैंने जिस आपको बताया कि आप माइनॉरिटीज के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत से मसाइल हैं, आप उसी पॉलिसी के अंदर बात कर सकते हैं। आप साउथ पंजाब के अंदर रहते हैं, बहुत सी पॉलिसीज हैं नेशनल लेवल के ऊपर जो कि साउथ पंजाब को निगलेक्ट करती हैं, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू। द थिंग इज कि आपको उसके बारे में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, वट एवर आइडियाज आपके अपने होने चाहिए, आप उसको डिफेंड कर सकें, आप उसके बारे में घंटों बात कर सकें, आपको पता हो कि वो पॉलिसी जो है क्या है, क्यों है। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ इसलिए चूज कर लिया क्योंकि आपकी इस फील्ड ऑफ स्टडी है, आपको अब कोई साइकोलॉजी का स्टूडेंट है, उसने कोई साइकोलॉजी की मतलब उसको पॉलिसी का पता ही नहीं है कि क्या है, उसने चूज कर ली, अब वो उसके बारे में बात ही नहीं कर सकता कि मेरा इसके अंदर मेरा स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, किस तरह हो। सो आपको बहुत जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, क्यों आपको लगता है कि पॉलिसी ठीक नहीं है, क्या आपको लगता है क्या जरूरत है, कैसे होगा। एंड देन फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली उन्होंने 3 पॉइंटर्स उन्होंने मेंशन किए हैं कि किस तरह आप प्लान करेंगे, किस तरह आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे और किस तरह आप मेजर करेंगे। तो ये 3 चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि आप पॉलिसी जिसके बारे में आप बात करने जा रहे हैं। इधर इन माय केस आई टॉक अबाउट सिंगल नेशनल करिकुलम। सो मुझे पता था कि अगर मैं पॉलिसी मेकर होता, सो आई वुड हैव प्लान दैट पॉलिसी। अगर मैं इस पोजीशन के अंदर होता तो मैं उसको प्लान किस तरह करता, मैं उसको इंप्लीमेंट किस तरह करता, और मुझे पता होता कि मैं इसको मेजर किस तरह करता, जो कि इवेल्युएशन होती है कि मुझे उसको पता होता कि मैं जो पॉलिसी बना रहा हूँ उसको मैंने मेजर किस तरह करना है कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। So आपको you need to have a very good understanding. Whatever policy you choose, just shortlist 2 or 3 and then think about it. उसके बारे में आइडियाज जनरेट करें और फिर आप देखें कि आप किसके अंदर कंफर्टेबल हैं। और जब आप लिखना शुरू करेंगे तो 250 वर्ड जो है वो आपके लिए बहुत कम होंगे। बहुत से लोग क्वेश्चन उनको आंसर नहीं आता, वो 2-3 लाइनों के अंदर ही अपना लिख लेते हैं कि ये पॉलिसी है और इसके अंदर इस तरह इम्प्रूवमेंट आ सकती है। लेकिन जब आपके पास इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है तो फिर आपके लिए 250 वर्ड बहुत कम होते हैं और फिर जब आप घंटों आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अप टू यू कि आप कौन सी पॉलिसी जो है वो चूज करते हैं। जुबैर, फर्दर आपने क्वेश्चंस की डिस्कशन करनी है या फिर हम Q&A सेशन की तरफ जाएं? आई थिंक आई एम डन। मैंने बस वो लास्ट में यही बताना था अबाउट क्वेश्चन सूची के। आई टॉक अबाउट इट एंड 2 क्वेश्चन जो थे वो अब मैंने देखे हैं अबाउट जो कि सूची मेडिनल ब्राइट जो कि सिर्फ वुमेन्स के लिए हैं, ओनली गर्ल्स के लिए हैं। सो अगर कोई गर्ल्स दे आर लिसनिंग टू मी, मे बी आई कैन टॉक अबाउट इट बिकॉज यू आर नॉट गोना अप्लाई फॉर दैट प्रोग्राम। सो आई डोंट थिंक हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए, बट दोज आर वेरी सिंपल। तो जो लड़कियां जो है वो 2 प्रोग्राम में अप्लाई कर सकती हैं फॉर सूसी कंपेरेटिव पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एंड मेडिनल ब्राइट प्रोग्राम। सो अच्छी बात यह है कि चारों जो आंसर्स हैं वो डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, क्योंकि जब हम हमारे टाइम के ऊपर सूसी जब कंपेरेटिव पब्लिक पॉलिसी मेकिंग और वुमेन लीडरशिप होती तो उस वक्त आंसर जो है वो सेम होते थे, तो उस वक्त मसला था। अब आंसर जो है वो दोनों स्कॉलरशिप प्रोग्राम के डिफरेंट हैं, इस क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट है। सो या वी कैन गो फॉर Q&A सेशन एंड देन या आई नीड टू गो इन मे बी 10 minutes. All the participants are required to ask all the questions they have. तो अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं गेस्ट से। Zubair, can you see the question? Yeah, I can see. First of all, I am not a PhD student. I still have to do PhD, so I cannot guide you. Secondly, because this program is only for SUSI exchange programs, so maybe if you talk about only SUSI, that will be great. About PhD exchange program, I personally think that's not personal to the person who is asking this question. But I think अगर आप PhD के applicant हैं या PhD करना चाहते हैं, so you should know कि PhD program के अंदर क्या करना चाहिए. You shouldn't be asking on these kind of webinars. PhD जो है उसका कैलिबर है, हर बंदा पीएचडी नहीं करता। अगर आप पीएचडी के एप्लीकेंट हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, कौन सी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है, किस तरह उसको अचीव करना है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है, अप्लाई किस तरह करना है, सो आई डोंट थिंक आपको पीएचडी करनी चाहिए। आप फिर अपना आइडिया जो है स्किप कर सकते हैं। सो आई कैन गाइड यू इफ देयर इज अनदर सेमिनार अबाउट पीएचडी, वी विल टॉक अबाउट इट एंड देन आई विल सजेस्ट कि आप गूगल पे जाएं। गूगल इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आप वहाँ पे जाके सर्च करें पीएचडी स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी हैं and then do some of the research and then one of the thing जो कि PhD के अंदर common होती है is motivation letter and CV, आपको वो बनानी चाहिए and then you should apply.
And then my field of study, I already talked about it. It was IT. I studied BS Information Technology from Islamic University of Bahawalpur. But right now, the program I'm doing is Digital Technologies, Communication, and Education. It's actually IT based program, but it's not completely software or IT program. It's an education program because I'm studying in the field of education, the use of technology in the field of education. And my area of research is natural language models, which is generative AI, how generative AI is influencing education and how we can use generative AI. That's why I am very positive about AI. You won't see many people talking about ChatGPT or any sort of generative AI which we use in education. हर कोई यही कहता है कि चैट जीपीटी एजुकेशन के अंदर नहीं यूज करनी चाहिए. But being a researcher of generative AI, I will say it's very helpful. In maybe next 5 years, we will be teaching chat GPT in our students कि किसको किस तरह use करना है, and then we will have a whole set of courses. और chat GPT जो है, it will be like the only tool that we will be using in education. So that's one of the area of my dissertation or my research that I'm doing in my master's right now. Are there any other questions? I'm looking for it. There are few members. Uh, Yes, ADP के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं. The only eligibility criteria is कि you should be in your second year of studies or second last year of studies. अगर आप ADP कर रहे हैं तो अगर आपका second year है तो you should apply. अगर आपने ADP कर ली है and now you are in associate other degree, आप मतलब आप 5th semester में हैं जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, so you can apply. And it doesn't matter कि आप virtual यूनिवर्सिटी में हैं, आप open यूनिवर्सिटी में हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं. The thing is कि आप क्या हैं. अगर आप अच्छे कैंडिडेट हैं तो you should be selected. जुबैर, ये थे तमाम क्वेश्चंस जो कि हमने डील कर लिए हैं, और ये थैंकिंग नोट्स भी आ रहे हैं आपके लिए. थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और होपफुली कि हम फ्यूचर में भी आपके साथ जो है सेशंस करेंगे, और आगे मास्टर स्कॉलरशिप्स या फिर इंटर्नशिप्स या आगे जितने भी एक्सचेंज प्रोग्राम्स आएंगे तो उसके लिए भी हम आपके साथ इंफॉर्मेटिव सेशन जो है फुली ज्वाइन करेंगे. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड गाइडेंस. Yeah, thank you for inviting me, and I hope it was helpful for everyone. Best of luck from my side for everyone who is applying. Don't lose heart, even if you are not successful. It's a learning platform, and you will learn. Actually, success से आप इतना ज़्यादा नहीं सीखते जितना आप failure से सीखते हैं. So if you want to be successful, you will learn a lot. Until अगर आप successful हो जाते हैं, you will get SUSI scholarship. Maybe after I know a lot of SUSI alumni जिनको SUSI उन्होंने achieve कर ली, but still they are not sure कि SUSI के अंदर apply किस तरह करना होता है. So that understanding you will get when you deep dive into the in your research कि आपको पता होगा कि actually what does that mean कि exchange program का मकसद क्या होता है, how you get it. So best of luck, and I see you because any of you will go to SUSI exchange program, you will be then part of Pakistan US alumni network, and then you will get to see each other after that. So best of luck. Thank you very much again. Thank you.